Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, A Race Lost and Won. We are going to start this chapter, which is named A Race Lost and Won, means a race which is lost as well as won. एक ऐसी रेस जिसे हारा भी गया है और उसे जीता भी गया है. Let's read the story of a girl who never gave up. Now we are going to read something about a girl who never gave up, who tries and tries and tries for something which was not going to happen by her. This girl always tries to do something even after she was not able to complete it. Even after so many failures, she was doing each and every attempt to win, to do that. So let's start. Well, when the bell rang for PT, I jumped up, my eyes aglow with excitement. The rest of the class groaned and rolled their eyes in my direction. So here, whenever I'll say I means that girl. Okay. So when she heard the bell, she jumped up and she was very excited. But other students were not excited and they were not ready to go. Well, come on, I shouted cheerily and galloped down the corridor to the PT grounds. Mrs. Reddy rose almost reluctantly to her feet when she saw me. Now come on, she shouted in a cheerful way and then she quickly moved to PT ground. क्या हुआ, एक लड़की थी जो कि हमेशा जिसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो जैसे ही पीटी का बेल बजा तो फटाफट से वो उठी, उसने जंप किया और वो उसकी आंखें चमक गई. आंखें चमकने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई कि पीटी का पीरियड आ गया है, अब उसे स्पोर्ट्स में जाने को मिलेगा. तो लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया कि बाकी सब लोगों को, बाकी सब बच्चों को कहा कि चलो लेट्स गो, लेकिन बाकी सारे बच्चे थे वो रेडी नहीं थे जाने के लिए. तो उसने क्या किया, उन्हें इग्नोर किया और वो सीधे ही पीटी ग्राउंड में चली गई. और वहाँ पर मिसेस रेडी रोज ऑलमोस्ट रिलक्टेंटली टू हर फीट व्हेन शी सॉ मी एंड मिसेस रेडी वॉज वेरी शॉक्ड and she suddenly stood up after seeing her. And now what she is saying? She is saying, the bell rang a minute ago. She remarked, you are extremely punctual, I must say. There was a ripple of indignant remarks down the line to the effect that I had browbeaten the girls into coming down early. But I ignored them and gazed fondly at Mrs. Reddy. My association with her went way back to my primary school days. I remember doing all sorts of thrilling things under her command. Now, what she is saying to that girl, she is saying that just now the bell rang just a minute ago and you arrived here. You are so punctual. What is the meaning of punctual? Punctual means who does work at proper time. जो हमेशा अपना वर्क, अपना काम टाइम पे फिनिश करता है, टाइम पे करता है, उन्हें पंक्चुअल बोला जाता है. तो यहाँ मिसेस रेडी उस लड़की को बोलते हैं कि जस्ट 1 मिनट पहले बेल बजी और तुम फटाफट से भाग के यहाँ आ गई, तुम बहुत पंक्चुअल हो. एंड देयर वर ऑलरेडी अ फ्यू गर्ल्स हु वर नॉट रेडी टू कम. इवन आई ट्राइड टू फोर्स देम टू कम डाउन अर्ली. अब वो बता रही है लड़की कि वहाँ पे जो बच्चे थे, जो गर्ल्स थी, मैंने उनको फोर्स भी किया कि आप चलिए, नीचे चलिए, लेकिन वो लोग रेडी ही नहीं थे आने के लिए. बट देन आई इग्नोर्ड देम एंड हेयर वेन एवर आई सी मिसेस रेडी आई फॉरगेट एवरीथिंग. यहाँ पर वो बच्ची कह रही है कि फिर मैंने सबको इग्नोर कर दिया और वैसे भी जब मैं मिसेस रेडी को देखती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ, मैं उन्हें बहुत ही पसंद करती हूँ. माई एसोसिएशन with her went way back to my primary school days. I remember doing all sorts of thrilling things under her command. And now the girl is saying she loves Mrs. Reddy so much that she is remembering her old school days. She is remembering her school days when she was in primary section.
she is saying that she loved to do things under her command. Means जब भी वो लड़की उनके साथ काम करती थी, मिसेस रेडी के साथ काम करती थी, तो उसे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज़ वो मिसेस रेडी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. We have come to next page. She would roll out prickly horsehair mats on the ground and assign a few of us to each. Then we would have to perform complicated somersaults with exciting names like front roll and back roll on them. More often than not, I would end up in a twisted, tangled heap, and Mrs. Reddy would leap to the rescue, extricating my limbs from unnatural angles and pushing them back to the original positions. Now, what happens whenever we used to go in our sports class, in our PT class? What Mrs. Reddy used to do, she used to roll out spined mats on the ground and assign some yoga postures to us. यहाँ पर मिसेस रेडी क्या करते थे कि वो ज़मीन पे मैट्स बिछा देते थे. मैट्स किसके बने हुए थे? होर्सहेयर के. प्रिकली मीन्स स्पाइन, मतलब कांटेदार. कांटेदार मैट्स बिछा देती थी मैम, और फिर हमें कुछ समरसॉल्ट्स करने को देती थी, जैसे कि फ्रंट रोल, बैक रोल. एंड व्हेन एवरीवन इज़ बिजी विद देयर वर्क, I always end up in a difficult twisted position and Mrs. Reddy would come to push me back to my original position. अब क्या होता था कि जैसे ही बाकी सब जब अपना अपना काम करने में बिज़ी रहते थे और मैं जब मिसेस रेडी को फॉलो करती थी और वो जो पोजीशन बताते थे मैं वो करती थी, पर मैं अपने ही तरीके से करके किसी भी एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाती थी जिससे मुझे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता था. फिर मिसेस रेडी आते थे और मेरी हेल्प करते थे मुझे वहाँ से बाहर निकालने में. Here extricating means freeing someone or something from a constraint or difficulty. मतलब मेरी पोजीशन ऐसी हो जाती थी कि मुझे मिसेस रेडी की ज़रूरत पड़ती थी कि वो आएँ और मेरी हेल्प करें और मुझे उस पोजीशन से बाहर निकालें. Then there were the cartwheels. We would have to spin ourselves round and round from point A to point B. But I was often a wheel out of control. I would go careening wildly to point Y instead and lie spread eagled, breathless, and hoping for the world to stop spinning about my ears. Now, what is happening? Now, when we all are doing cartwheels, in which we had to spin round and round from point A to point B. अब जब हमें कार्टव्हील्स करने को मिला और हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक राउंड करना था, तब व्हाट आई यूज टू डू, आई डायरेक्टली मूव टू पॉइंट वाई. मतलब यहाँ पे जो लड़की है उसको जैसा बोला जाता था वो वैसा करती तो थी, ट्राई करती थी करने का, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं मिस कर देती थी किसी चीज़ को और वो एक अलग ही पोजीशन में एंड अप करती थी अपने आप को. मतलब वो एक अलग ही पोजीशन में पहुंच जाती थी. एंड द गर्ल वॉज नॉट एबल टू डू प्रॉपर postures. Maybe you should not do this particular exercise, Mrs. Reddy would say, but I would refuse her offer outright. I meant to master anything and everything that had to do with sports because I love it. Now Mrs. Reddy is also getting frustrated with me, and Mrs. Reddy is saying that please do not do these type of exercises, you can't do it. अब मिसेस रेडी मुझे बोलती हैं कि ये एक्सरसाइजेस तुम ना करो, तुमसे नहीं होगी. बट हाउ कैन आई लीव इट, हाउ कैन आई इग्नोर इट, बिकॉज आई लव स्पोर्ट्स, आई लव दीज थिंग्स, सो आई डेंट लिसन टू हर. लेकिन मैं कैसे मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है. मीन्स उस गर्ल को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो वो इस चीज़ को मानती ही नहीं है और कंटिन्यू करती है. And then there were the horses, raised triangular wooden structures that you had come racing at and jump over. Now there is one horse you can see in this picture. This is made up of wood. Now on this horse they have to do some things. Now they looked more like plateaus really, or like cupcakes that had gone wildly out of shape.
I loved them too. Seeing Dipali and company sprint up to the horse, touch it lightly with their fingers, and skim over it was such fun. And I was literally straining at the leash to be allowed to do it. Then I would run at the horse like a charging bull, soar into the air like a graceful hawk, and touch the top of the horse not lightly. Now, when everyone is seeing the horse, when everyone is touching the horse, when Dipali and her company, Dipali and her friends were touching the horse, the wooden horse, जब दीपाली और दीपाली के फ्रेंड्स उस वुडन हॉर्स को हाथ लगा रहे थे, उसको देख रहे थे, तब आई वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटिंग. मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं भी जाऊं, पर मिसेस रेडी को देख के आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ. लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आई वुड रन एट द हॉर्स. मैं फटाफट हॉर्स के पास भाग के गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू टच दैट हॉर्स. और मैंने वो हॉर्स टच किया, लेकिन मैंने उस हॉर्स को प्यार से टच नहीं किया. Moving to next page. Surprise. I would utter a squawk of surprise and wait for Mrs. Reddy to rush up and extricate me and my sore bottom from my elevated position. Now, what I did, now we all were so excited for the horse. Even I was so excited, and I wanted to take a ride on that horse. I wanted to do something on that horse. So I went there and I touched it with my fingers and heavily with my bottom. Now what I did, मैं उसके पास गई, मैंने उसको टच किया और फिर से मैं उस हॉर्स के साथ ऐसी पोजीशन में आ गई कि मिसेस रेडी को मेरे पास आकर मुझे उस पोजीशन से बाहर निकालना पड़ा. Yet nothing could deter me, not even the remarks of my hysterical classmates, who quickly identified me as their sole source of amusement. They would wait with bated breath for me to twist, tangle, or tie myself in knots, and then spend the rest of the class twisting and tangling the tying and tying themselves up in laughter. But still, after so many unsuccessful attempts, लेकिन अभी भी मैं इतनी चीज़ों में फ़ेल हो गई, मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाई. उसके बाद भी आई डिडंट लूज़ होप, एंड इवन आफ्टर एवरी वन वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. सब लोग को मेरा मजाक बनाने का मौका मिल गया था, सब लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे, सब लोग हंस रहे थे. ट्राइड अगेन एंड अगेन. स्टिल आई नेवर लूज़ होप एंड ट्राइड अगेन एंड अगेन. लेकिन फिर भी मैंने अपनी होप नहीं छोड़ी और मैंने बार बार एक ही चीज़ ट्राई की. Not so Mrs. Reddy, however. Over the years, I had seen her grow from a young, brisk, energetic person to not so young, slower person with a very resigned look on her face. Now, over the years, I saw Mrs. Reddy. Mrs. Reddy was young before, but nowadays she is not that young, she is not that energetic. अब मिसेस रेडी बहुत सालों के बाद जब मैं उन्हें देखती हूँ, बहुत टाइम से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ, तो तब वो थोड़े यंग थे, एनर्जेटिक भी थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी एनर्जी थोड़ी कम होती जा रही है और वो उनके फेस पे भी दिखता है. Some even suggested that I was responsible for that look, but I refused to believe them. For after all, where would Mrs. Reddy find such an enthusiastic pupil? For I was in love with sports, every minute of it, every complicated exercise, every exhausting hurdle, every last bit of it. And I refused to believe when I was good at it. After all, I put in my best, and it was just bad luck that I ended up in unforeseen situations. Now, some people used to say that I was responsible for Mrs. Reddy's that look. कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनके एनर्जेटिक ना होने का, उनके बूढ़े होने का रीज़न मैं हूँ. But how can it be possible? And I never believed them because I was so energetic. Even after so many failures, I was so energetic. I followed everything which was said by Mrs. Reddy. मैं इतनी एनर्जेटिक थी, मैं हर वो काम करती थी जो मिसेस रेडी बोलते थे. हाँ, मेरा बैड लक ऐसा था कि मैं वो काम फिनिश अप नहीं कर पाती थी जिस तरीके से वो होना चाहिए था.
However, right now the air crackled with expectation. The inter-school sports competition was around the corner, and most of the teams had been selected for the difficult events. I had practiced so diligently under Mrs. Reddy's eye that I thought my body would crack a muscle or two. At first, I thought I would be chosen for basketball team. I skipped nimbly between my towering colleagues and cleverly dodged and dashed, but the others said I was a nuisance, that I got under their feet and hampered their movements, just as if I were a bothersome mosquito. Now, an inter-school sports competition was going to be held, and in that competition many activities and games were to be held, and I was so excited as I wanted to play games. अब क्या होने वाला था, स्कूल में एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ बहुत सारे गेम्स होने वाले थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट भी किया जा रहा था एंड आई थॉट दे वुड चूज़ मी फॉर बास्केटबॉल और मुझे लगा कि वो मुझे बास्केटबॉल टीम में चूज़ करेंगे. बट ईच एंड एवरी पर्सन वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज अ न्यूसेंस टू देम. लेकिन बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि मैं एक न्यूसेंस हूँ, मतलब मैं सिर्फ परेशान करने के लिए हूँ, मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ परेशान कर सकती है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती. इट वॉज जस्ट बिकॉज आई एंडेड अप विद अनसक्सेसफुल इवेंट्स. ये सब इसीलिए हो रहा था बिकॉज मैंने जितनी भी चीज़ें की थी वो हमेशा ख़राब हो रही थी. I rather fancied my chances at long jump. I visualized myself soaring over the sand, perhaps even the length of the pit. Now, what happened? I thought I would take part in long jump, and I imagined myself that I would end up in a sand pit. मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग जंप में ट्राई करूँगी, लेकिन मैंने जब इमेजिन किया तो ये इमेजिन किया कि मैं उस लॉन्ग जंप में भी सैंड में यानी मिट्टी में दबी हुई पड़ी हूँ. However, all I did was to bury myself in the sand, sending choking sprays of it in every direction and almost suffocating myself. I expected a tirade from Mrs. Reddy, but she just shook the sand out of her hair and eyes and told me to rest a little. Now, when she tried long jump, again she ended with unsuccessful things. Again, she ended up with unsuccessful attempt and she was buried in sand. Now she was thinking that Mrs. Reddy would shout at her. But Mrs. Reddy just shook her hair and eyes and told her to rest. अब उसको लग रहा था कि फिर से मैंने ऐसा काम कर लिया है, फिर से मैं काम पूरा नहीं कर पाई, तो अब मिसेस रेड्डी को मुझ पे बहुत गुस्सा आएगा. लेकिन मिसेस रेड्डी ने सिर्फ अपने बाल झटकाए, अपनी आंखें हिलाई और मुझे कहा कि तुम रेस्ट करो. Now only the racing teams were to be chosen. Ever since I could remember, I loved racing. Right from a memorable primary section crawling race where I held my own quite well, clouds of chalk billowing from my pinafore as I determinedly scrambled over the lines, my nose almost to the ground. Now only one and only sports was remaining, and that was racing. एंड आई वॉज टू फॉन्ड ऑफ रेसिंग. अब एक लास्ट ही स्पोर्ट बचा था, वो था रेसिंग का, और मुझे रेसिंग बहुत पसंद थी. सो राइट फ्रॉम अ मेमोरेबल प्राइमरी सेक्शन क्रॉलिंग रेस वेयर आई हेल्ड माई ओन क्वाइट वेल. एंड अब मुझे क्या याद आ रहा है कि प्राइमरी सेक्शन में जब वो क्रॉलिंग रेस हुई थी, जब मैंने खुद से ही वो चीज़ की थी, तब मैंने अपना नोज़ ज़मीन पे दे मारा था, मतलब तब भी मैं अनसक्सेसफुल ही हुई थी. Now moving to next page. Okay, so in today's class we'll take till here only. Remaining part we'll study in next class. Till then, stay safe, stay home.